part of chapter 10, changing political structure of India. Okay. Yes. Okay. First question. Write a short note about the Jats and their rise to power. Page number 190. Come to page number 90. You can see the Jats paragraph. Jats वाला paragraph है ना? मिला सभी को? Page number 90. That full para is the answer. First answer. The Jats से लेके in the state. That full para is your answer. Second question is there. How and why did autonomous state declare their independence? Page number 87. Page number 87. Emergence of states from the Mughal Empire. Emergence of states from Mughal Empire वाले पैरा में आना, वो पूरा पैरा second answer है. That is your second answer. That full para. मैम कहाँ से? Page number 87. Emergence of states from the Mughal Empire. वो पैरा है ना, उसका पूरा पैरा 3 major provinces से लेके show their autonomy. Up to there the answer is. Got it? Yes. Yes, ma'am. Yes. Third question. How did Asaf Jha establish the kingdom of Hyderabad? Okay, that is the answer. The third answer is in page number 88. Third answer is in page number 88. Hyderabad वाले पैरा में आना. Come in Hyderabad वाला पैरा. Okay, seen everyone. उसका starting से Nizamul Mulk Asaf Jha was appointed governor of Deccan. Following the death of Aurangzeb and the period of instability, Asaf Jha manipulated power and became the indirect ruler of the state of Hyderabad. Up to that much. That is your third answer. Got it, everyone? Ma'am, ruler of the states of Hyderabad. Yes, up to that you have to mark. Got it, everyone? Yes, ma'am. Okay, next question. How did the taxation by zamindars led to weakening of the kingdom of Awadh? Okay. Okay. Come to page number 87. Come to page number 87, everyone. Page number 87. Awadh वाले पैरा में आना. Awadh वाला जो पैरा है उस पे आना. Starting से mark करना. Just I am reading. You see the lines. Okay. Burhanul Mulk Shadat Khan was the Subedar of Awadh during the crisis in Mughal Empire. Taking advantage of the situation, he established Awadh as an independent province. He suppressed rebellions of nobles and implemented a systematic revenue collection. He also negotiated with local zamindars for assistance in return for security. Burhan ul Malik. Up to that much you mark the answer. Got it, everyone? Yes, ma'am. Okay. Then उसके बाद बुरहानुल मुल्क तक मार्क करने के बाद सिक्सटीन्थ लाइन पे आ जाना. आफ्टर बुरहान उल मलिक. 16th लाइन पे है आफ्टर बुरहान उल मलिक. गॉट इट, एवरीवन? बुरहान उल मलिक 16th लाइन पे.
Got it? Yes. Okay. वहां से after Burhanul Malik, his son ascended the throne. The nobility of Awadh was favored, so they owned their alliance to Awadh and not to the emperor. Up to that. मैम एक बार और बता दीजिए। 16th लाइन, बुरहानुल मलिक से जब मार्क कर लिया आपने तो फिर आपको 16th लाइन पे आना है। वहां पे है आफ्टर बुरहानुल मलिक हिज सन असेंडेड द थ्रोन, द नोबिलिटी ऑफ अवध वाज फेवर्ड, so they owed their alliance to Awadh and not to the emperor. Got it? Okay. Fifth question. How did the foreign invasions by Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali expose the vulnerability of Mughal Empire? And for page number 87, come to page number 87, everyone. Come to page number 87. Activity 1 के ऊपर वाला पैराग्राफ। मैम द प्रोविजनल से ये तो पेज नंबर 87, पेज नंबर 87 एक्टिविटी 1 है ना, लिखा हुआ वहां पे एक्टिविटी 1, उसके ऊपर वाला पैरा है, उसके ऊपर वाला पैरा। आई एम रीडिंग इट, यू जस्ट गो थ्रू द लाइन, ओके। The attacks by Nadir Shah in 1738 added to the troubles of Mughal rulers. The Mughal army faced an embarrassing defeat at Karnal. Nadir Shah marched into Delhi and massacred the population under a pretext. The Mughal emperor Muhammad Shah begged for mercy and handed over the keys of royal treasury. The loot included the famous peacock throne, Kohinoor diamond, and thousands of elephant, camel, horses, and slaves. Later, a series of attacks by Ahmad Shah Abdali between 1748 and 1761 left the Mughal Empire in tatters. Abdali invaded India 5 times and looted whatever was left. Up to that much. मैम एक बार रिपीट कर दी। Got it, everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Attack से लेके up to the वहाँ left तक है ना, थर्ड लास्ट लाइन है वहां तक, ठीक है? Yes, come to the long answer questions. Discuss the reason for the decline of Mughal Empire. Discuss the reason for decline of the Mughal Empire. Come to page number 86. Come to page number 86. फोर्थ लाइन, स्टार्टिंग का जो पैरा है ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड क्राइसिस इन मुगल एम्पायर, उसके ऊपर वाला जस्ट अबव वाला वो पैरा जो है उसका फोर्थ लाइन पे आना, अंडर मुगल रूल। गॉट इट एवरीवन? अंडर मुगल रूल। Yes, ma'am. ओके, अंडर मुगल रूल वहां से मार्क करना फिफ्थ लाइन पावर तक, फिफ्थ लाइन पावर, अप टू पावर, फिफ्थ लाइन पे है पावर। Yes, ma'am. देन उस पैरा में आ जाना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड क्राइसिस इन मुगल एम्पायर वाले पैरा में स्टार्टिंग से मार्क करना। आई एम रीडिंग द लाइन, जस्ट मार्क इट, ओके। द मुगल बिलीव्ड इन सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेयर पावर्स टू अपॉइंट पीपल इन इंपॉर्टेंट पोजीशन वाज इन हैंड्स ऑफ एम्परर। मार्क इट, अप टू एम्परर। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट पैरा, उसी के नेक्स्ट पैरा में आ जाना, 12th लाइन पे आ जाना। 12th लाइन पे है औरंगजेब एक्सटेंडेड, औरंगजेब एक्सटेंडेड। 12th लाइन पे है औरंगजेब एक्सटेंडेड, वहां से ग्लोरियस डायनेसिटी तक, ग्लोरियस डायनेसिटी तक। That is the answer. Next question is, elaborate on formation of independent states which were earlier powerful provinces of Mughal Empire. Okay, so that states were
Mysore and Rajput only. The independent state, Mysore and Rajput. Come to page number 88, independent state. Page number 88, independent state. वहां से मार्क करना देयर वेयर स्टेट्स, ये पूरा पैरा लिखना है. देयर वेयर स्टेट्स which were not the part of Mughal Empire but had accepted the sovereignty of Mughals. They were ruled independently by their own rulers. These states took advantage of unstable political situation and declared their complete independence. ठीक है, वो पूरा फिर स्टार्ट करेंगे मैसूर से. मैसूर पे मार्क करना. The kingdom of Mysore was located to the south of Hyderabad and was ruled by Wadiyar dynasty. It was an autonomous state and not under the direct control of Mughals. Mughals तक मार्क करना. The kingdom से Mughals तक. मैम डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मुगल्स. हाँ, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मुगल्स. Then आ जाना next page पे. Hyderabad on the north and the British from the south. He was succeeded by his son Tipu Sultan, who carried on the unfinished task started by his father. Mark it that much. That is of Mysore. Rajput का मार्क करना. Rajputs always enjoyed a privileged status in the Mughal court. Many of the powerful Rajput kings were made subedars of principal territories. After the death of Aurangzeb, the Rajput kings tried to break away from the Mughal control and form their own kingdoms. Up to kingdoms, mark it. फिर 1 2 4 5 6 7th लाइन पे आ जाना. द मराठास. 7th लाइन पे आना. द मराठास used this opportunity to push ahead. Savai Raja Jai Singh of Amber and Raja Ajit Singh of Jodhpur were declared, under whom the Rajput kingdoms declared independence. मैम द मराठास. हाँ, लास्ट तक, इंडिपेंडेंस तक. Next question. How did the Maratha rise to power? Is it different from the way to the Sikh rose to power? Okay. Come to page number 89. Come to page number 89. मराठास वाले पैरा में आना. पेज नंबर 89 पे मराठास वाले पैरा में आना. 5th लाइन पे शिवाजी वेग्ड. 5th लाइन पे शिवाजी वेग्ड. War against Mughal domination. After his death, his successor continued the struggle with help from highly motivated and brave soldiers of Maratha army. The Peshwa declared Pune as their capital and established the Maratha kingdom. जो ब्रैकेट में लिखा है वो नहीं लिखना है, उसको कट कर देना. जो ब्रैकेट में है वो नहीं लिखना है. मराठा किंगडम. अप टू मराठा किंगडम मार्क एवरीवन. मैम जो ब्रैकेट में है उसे नहीं लिखना. बाकी मैम नहीं नहीं, हाँ बाकी लिखना है. वही मराठा किंगडम से लाइंस काउंट करना और 4th लाइन पे आना. मराठा किंगडम्स हैज एक्सटेंडेड इनटू द डेक्कन पेनिनसुला वाला लाइन भी मार्क करना. मराठा किंगडम हैज एक्सटेंडेड इनटू द डेक्कन पेनिनसुला. ठीक है, वो पहले लिखोगे. शिवाजी के सिख से कैसे डिफरेंट है फाइट ना, ये अपन को बताना है. तो पहले ये शिवाजी. हाँ, मराठा से कहाँ तक? पेनिनसुला. मराठा किंगडम हैज एक्सटेंडेड इनटू डेक्कन पेनिनसुला. एक लाइन है बस वहीं पे. उसके बाद अब सिख का लिखोगे. सिख वाले पैरा में आ जाना. फिर सिख वाला पैराग्राफ उसी के जस्ट बगल में है. सिख वाले में आना. स्टार्ट मार्किंग इट. Okay, Punjab was a rich region of India. It came into prominence due to Sikh religion, which was started by Guru Nanak Dev. Though started as a religious and spiritual movement, it gained political overtones with the execution of Guru Aranjan Singh. Guru Gobind Singh formed the Khalsa, the political and military wings of the Sikh. ठीक है, वहां तक मार्क करना.
फिर the Sikh continued their struggle to declare themselves as an independent state. For this, they organized themselves into Jatas and challenged the authority of Mughals and resisted attacks by Ahmad Shah Abdali and later Marathas. Later Marathas से लेकर तक मार्क करना है. Okay, got it everyone? मैम कहाँ से? कंटिन्यूएशन है पैराग्राफ का. पंजाब वॉज रिच से लेके वहां तक, लेटर मराठास. यस मैम.